Hello friends, so we are back with our another guest, Aditya Tumma. Aditya, Hello. welcome to the channel. Thank you so much for inviting me, Lucky Bhai. So Aditya works in Apple, हैदराबाद में काम करते हैं. तो आदित्य, मैं चाहूँगा आप अपनी और हमारी ऑडियंस को एक बार इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में. Hello friends, my name is आदित्य और मैं हैदराबाद का ही पला बड़ा हूँ और coming to career wise, yes, as Lucky mentioned, I work at Apple Hyderabad. So I've been working here since 4.5 years. अभी 4 साल हो गए अभी इधर काम करते हुए. और आदित्य, आप इससे पहले भी कहीं काम करके आए हैं? यस लकी भाई, इससे पहले मैं और कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में किया है. दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट जॉब स्ट्रेट आफ्टर कॉलेज. मेरा पहला जॉब बायजूस में था. आई वाज इन सेल्स डिपार्टमेंट. सो आई वाज अ BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इन बायजूस इन हैदराबाद बैक इन 2018. आई वर्क देयर. 1 साल काम किया उधर. उसके बाद आई स्विच टू ऊबर क्योंकि मुझे सेल्स में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था. when it comes to career wise, I don't want to grow in sales department, so I switched to the other for operations side. then मैं Uber में काम कर रहा था. Uber में मैंने रिस्क एनालिस्ट का जॉब, वो रोल में मैंने काम किया. उधर मैंने 1 और साल काम किया. देन आई हैड प्लान्स ऑफ गोइंग अब्रॉड टू डू मास्टर्स, पर आई डिड अप्लाई फॉर मास्टर्स. मेरे को एडमिट्स भी आ गए थे US से. बट 2020 इज़ द ईयर. कोविड था एंड पूरा इंडिया पूरा लॉकडाउन में था. सो दैट्स द रीज़न मेरे वीज़ा इंटरव्यू स्लॉट्स भी मुझे मिल नहीं रहे थे. तो मेरा एडमिशन भी 1 साल के लिए डेफर करना पड़ा था. तो 1 साल आई वॉज सिटिंग एट होम आइडल डूइंग नथिंग. सो इंस्टेड ऑफ मी डूइंग नथिंग, आई थॉट ऑफ टू वर्क समवेयर. थोड़ा टाइम किल कर लेते हैं. देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर जॉब्स. then I happened to get into Apple. मुझे रोल ओपनिंग मिला था. then I applied. then I ended up working in Apple now. तो आप एप्पल में कैसे ज्वाइन करें, मतलब क्या प्रोसेस है आप एप्पल में ज्वाइन करने का आपका? तो प्रोसेस ऐसा, इट्स वेरी सिंपल. लाइक यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जॉब. आप किसी वेबसाइट को, वो पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाओगे तो आपको अवेलेबल रोल्स मिल जाएंगे. So similarly, even I went to the available roles. मुझे एक notification आया that Apple is hiring for AI/ML analyst. So I went there और मैंने अपना eligibility check किया, qualifications, मतलब is my profile really fit for that role? So that's the first thing you need to do. And मेरा profile fit हो रहा था. then I applied straight away. So there are two ways. One, either you can apply, नहीं तो अगर आपके कोई जान पहचान के friends या family already working in Apple, then you can ask them to refer you. अगर आपके कोई friends, you can easily make connections on LinkedIn and you just need to reach out to them asking for a referral. अगर if they are okay and if they are satisfied with your profile, and they will be happy to refer you. So for me, coming to my case, I did ask for a referral to one of my friends and family colleague working in Apple. तो मैंने पूछा था and they said okay, and उन्होंने मुझे refer किया था. तो yeah, through referral, and I had to go through the interview process. 4 to 5 राउंड्स के इंटरव्यू प्रोसेस था. अगेन वो डिपेंड करता है रोल के हिसाब से. एवरी रोल हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ इंटरव्यू राउंड्स. सो ऐसा था. सो रेफरल से एक क्या कुछ एडवांटेज है, या विदाउट रेफरल भी जाना या रेफरल जाना सेम लाइन में आपको ले आता है? Good question, Lucky Bhai. But when it comes to Apple, there is no bias, and Apple doesn't entertain this. So अगर कोई बंदा या बंदी आपको रेफर कर रहा है, that is as good as you applying by yourself. Okay. क्योंकि अगर if anyone is referring you, that doesn't mean that आपको कुछ advantage मिलेगा compared to the other people who are applying by themselves. No, even if someone refers you, your application same bucket में आ जाएगा along with the other applicants who have applied by themselves. Only benefit मिलेगा to the person who referred you if you have cleared the interview and if you have started working and completed 6 months in Apple. then the person who referred you, उन्हें कुछ monetary wise उनको advantage मिलेगा. but comparatively to other applicants who apply by themselves, it is the same. there is no advantage अगर कोई बंदा refer कर रहा है आपको. अच्छा, तो ये अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस कितना लंबा है, कितने स्टेजेस का है? Depends on the क्या बोलते हैं, availability of the HRs and how quick the role should be filled. and also depends on holiday season चल रहा है, तो that might take 1 week or 10 days. अगर everything is going fine,
देन आप अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो द प्रोसेस वुड बी completed in 1 week itself. तो उसमें क्या क्या राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू और कुछ प्रैक्टिकल राउंड क्या क्या होते हैं इसमें? So as I said earlier, interview rounds depend on the role that you are applying. Agar if you are applying for an SDE role or another corporate, a lawyer role where legally in a legal department if you are applying, so it depends completely. So for me, coming to my case, I am an AI analyst. So मेरे 4 राउंड थे. पहला राउंड था टेलीफोनिक राउंड where a HR would call you for the initial conversation to know you better, like from where you belong, to do a basic background check and all, and how willing are you to continue, I mean to apply for this role or you're looking for this role. So the basic conversation telephonic round hoga. Uske baad second round would be a HR round, sorry, technical round wherein they will be testing your technical skills based on that role. Matlab, are you well versed with the basic tools, like for example Excel, again SQL, Python, एंड ये टेक्निकल रोल डिपेंड करता है रोल के हिसाब से, जॉब रोल के कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट आपके पास है कि नहीं, दे विल टेस्ट दैट. Third round would be with the manager, the team manager, where he would be hiring you in his team. So he will be doing a basic check on how the candidature is. Or last round would be a behavioral HR round wherein are you really fit for this job compliance wise, are you following ethics like integrity. So they would be testing on these soft skills. So that would be the last round, and compensation salary discussion would happen at the last round. So Overall it would be 4 to 5 rounds. Okay, so कितने टाइप के रोल्स हैं एप्पल में, मतलब कितनी वैरायटी है? So और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. One department is artificial intelligence, machine learning. One is software and engineering. One is corporate functions, and one is PR marketing. So it's not just in our company. Every company has different departments. And मेरा department आता है machine learning and artificial intelligence. Okay. So every role has its own set of interview rounds, their own method of conducting interviews. तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं? Yes. मतलब आपका डे टू डे वर्क क्या है? आप व्हाट आर यू डूइंग इन एप्पल एज ऑफ नाउ? So my going by the title, I'm an AI analyst. So what we do is basically we make Siri better. So जो आप Siri से आप daily interact करते हो, you ask Siri for, you set Siri request, you ask, right, like hey Siri, set an alarm or send a message to something. So we process all that data. So we are the first recipients of Siri's user data. And Apple is one organization where it gives importance to customers' privacy. So we won't check all the data from the user. Instead we take consent from the user. हम लोग यूजर से कंसेंट लेते हैं अगर आपको Siri से आपका डेटा शेयर करने के लिए are you okay to do this or not, and if they say yes, then we will have that data, and if they say no, we will never touch their data. So we work on different projects. This is one part. For people who are using Apple 15 or Apple 16, अभी Apple Intelligence feature उनके फ़ोन में आ गया है. एंड एप्पल इंटेलिजेंस में बहुत सारे फीचर्स अभी आ गए होंगे, लाइक ऑटोमेटिकली इट समराइजेस योर ईमेल टेक्स्ट. अगर आपके पास 5 से 10 ईमेल्स है, इंस्टेड ऑफ यू रीडिंग एवरी ईमेल, आपको एक शॉर्ट समरी आपको दे देगा, एक स्क्रिप्ट में आपको दे देगा, सो दैट आपका टाइम बचेगा. सो वो एक नया फीचर आ गया है. दूसरा फीचर है जेनमोजी. अगर आपको कस्टमाइज्ड इमोजीज बनाना है तो आप you just need to write a prompt saying that I need a person on a bicycle traveling in space. So Apple will automatically generate a customized emoji. So that is one project. The other project is अगर कभी कभी Siri won't give you the right answer. If you say ask Siri to set an alarm at 12 p.m, वो समझेगा नहीं और वो रात के 10 बजे 11 बजे डाल देता है. So that is an error from Siri side. So we make sure that Siri is delivering the right content for every user, whatever the user is asking for. अभी Apple से Vision Pro बोल के एक नया डिवाइस आया है, वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट इट इज़ रनिंग इन US. एंड वी मेक श्योर दैट Siri is delivering correct in that too. हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं. वीडियो, मोस्टली डेटा वीडियो के ऊपर आता है,
where since Vision Pro is a AI VR headset, so it needs to see everything whatever is present on the in front of the camera. So we make sure that we annotate every single thing that we see through that video. सो सीरी क्या हमारी बातें सुन रहा है सारी अभी भी, अगर हमने uh, उसको परमिशन दे रखी है? अगर सिरी, इट्स नॉट जस्ट सिरी, एवरी चैट बॉट चैट असिस्टेंट जो है वो सुन ही रहा है, क्योंकि आपको कैसा आप ही सोचो, अगर आप हे सिरी बोलोगे तभी सिरी एक्टिवेट होता है, अगर आप हे सिरी नहीं बोलोगे तभी वो सिरी एक्टिवेट नहीं होता है. सो दैट मीन्स इट कॉन्स्टेंटली लिसन्स टू द ट्रिगर वर्ड. अगर हे सिरी बोलेंगे तभी वो एक्टिवेट होता है. सो येस, इट इज लिसनिंग टू all the conversation whatever we are having, but it never stores the data. It only takes the data after the trigger word hey siri के बाद आप जो कमांड बोलते हो वही 10 to 15 seconds का जो डेटा है वही वो स्टोर करता है. उसके बाद वाला all the data it won't store, because user privacy is the paramount. ओके. सो आदित्य, व्हाट आर द मतलब सैलरी एक्सपेक्टेशंस? क्या अगर एंट्री लेवल पे someone wants to join Apple, what will be the expectation in different roles? Good question, Lucky Bhai. As you said, different roles, every salary range also depends from every role to role and every department to department. For example, मेरा department आ गया machine learning and artificial intelligence. I won't tell you the exact number because it depends on the candidature also and the experience that he is holding. So somewhere it starts from 7 lakhs 7 LPA and it goes up to like 20-25 lakhs LPA At entry level. At entry level. Again, it depends on different factors, one being the experience that the candidature is bringing, और दूसरा हो गया स्किल सेट, कौन से स्किल्स आप उन्होंने किया और प्रोजेक्ट्स उन्होंने किस तरह के किया, रिलेटेड AI रिलेटेड. अगर वो बंदा ही हैज़ वर्कड ऑन एनी अदर chat bot or any other assistant, then that would be an add-on. So salary is very comfortable to negotiate in Apple, and all the roles are equally challenging and they are meeting the market requirements. So the salary won't be a big hassle for freshers as well. So comfortable salary. और बाकी डिपार्टमेंट में? Baki department also the same thing. For example, if you're taking SDE or engineering tech role, so the minimum salary might start from 10 LPA and it might go based on negotiation, and also as I mentioned the other factors, आपका experience और आपके skill sets, आप कौन से projects में काम किया है. तो salary is pretty vast topic to discuss because everyone has their different opinions, and but one thing I can assure you that you won't be disappointed with the salary. बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी. तो एक जेन्युइन क्वेश्चन किसी भी दिमाग में आता है कि अगर मैं एप्पल में काम करूंगा, Yes. तो आईफोन तो या फिर एप्पल प्रोडक्ट्स फ्री मिलना चाहिए, तो क्या मिलते हैं? मतलब टॉकिंग अबाउट इंडिया एप्पल साइट, हमें नहीं मिलता है. हमें एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट फ्री में नहीं मिलता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्रोडक्ट फॉर फ्री, हमें थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में हमें एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने को मौका मिलता है. वी हैव एम्प्लॉय परचेस प्लान, जहाँ नॉट जस्ट फॉर द एम्प्लॉय के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स अगर वो एप्पल के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वी कैन हेल्प देम इन गिविंग अ सर्टन परसेंटेज इन डिस्काउंट्स. और फॉर एम्प्लॉय को थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है कंपैरेटिवली. And we also have another scheme wherein every employee gets $500 of free cash, wherein they can make use of this benefit to buy any Apple product. So that is one of the advantages which an employee gets. And if you are making use of that discount, mostly आपको एक iPhone आपको लगभग फ्री में मिल ही जाता है. लाइक अप टू लाइक 5 से 10 हज़ार आप अपने पॉकेट से दोगे तो आपको नया ब्रांड न्यू एप्पल का आईफोन मिल ही जाता है. सो गाइस, जो लोग एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए एप्पल में आ रहे हैं वो ये बात देख ले ध्यान से. It's not free, it's just a discount. It's discount. You won't be getting a free iPhone. और क्या फैसिलिटीज है एप्पल में? जैसे हम लोगों ने देखा है कि आईटी कंपनीज में काफी टाइप की फैसिलिटीज मिलती हैं, फ्री लंच, फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री जिम. तो एप्पल में क्या मिल रहा है आपको, हैदराबाद कैंपस में या बैंगलोर कैंपस में? I never explored the Bangalore campus yet, क्योंकि बैंगलोर में अभी recently Apple का headquarters launch हुआ है, I think last year. But in coming to Hyderabad, it's unfortunate that we don't get any of the free meals that other companies are giving. तो हमें free meals नहीं मिलता है.
Instead, we have a cafeteria wherein you can get coffee, bread and butter, and the basic cafeteria stuff and all. And facilities में cabs, we won't get cabs to for commute. ऑफिस से घर से ऑफिस कम्यूट के लिए फैसिलिटी नहीं है. You need to get your own vehicle, or you need to come by your own. And but besides this, we have other benefits like health insurance, fitness reimbursements, and one benefit is for to help others and for yourself also to buy any Apple product. And we have when it comes to medical insurance, we have dental reimbursement coverage, and we have spectacles, optical support if you're taking the spectacles. For if you have sight and if you want a new pair of spectacles, then we can give you discounts on them. And if you want to do a dental treatment, root canal treatment, so I think ये benefits दूसरे companies में भी है. So it doesn't make any different from other companies, just that we are giving more in terms of number. Benefits के जो number है तो उसमें monetary wise we can claim more bills, we can claim more receipts to get the more. So that is one good benefit that I found. अच्छा, तो मतलब बेनिफिट्स कंपैरेटिवली अदर आईटी कंपनी से एप्पल में उतने नहीं है, जैसे फ्री मील्स वगैरह, बट आई थिंक आपको क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं. Yes, provided all the claims are legitimate and you yourself are spending it. ओके. So yes. तो आपका अभी तक 4 साल 4.5 साल आपका एप्पल Yes, में हो गया. 4.5 साल हो गए. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मतलब कैसा लगा आपको इस कंपनी में? मतलब अगर कोई एंट्री लेवल पे समवन वांट्स टू जॉइन, आप मुझे शॉर्ट में अगर इसका आंसर दे पाएँ कि मैं अगर कोई एक नया बंदा है और वो मुझसे बोलता है कि मुझे एप्पल जॉइन करना चाहिए या नहीं, तो उसका क्या आंसर होगा? मतलब आंसर होगा भाई आग बंद करके अप्लाई कर दो, क्योंकि लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल वंस यू जॉइन एप्पल, बिकॉज एप्पल इज अ कंपनी वेयर इट इज चैलेंजिंग एट टाइम्स. If you want to work really hard and go above and beyond, there are different projects. And when it comes to building rapport with the team members and also with the team leaders, you can easily have access. ऐसा नहीं कि मैं एप्पल में आ तो गया हूँ, अगर मुझे किसी से बात करना है, आप मैनेजर से बात कर सकते हो. अगर आपको बड़े बड़े रोल्स लाइक टिम कुक है और द पीपल हु आर वर्किंग इन bigger roles, senior level roles, you have easy access to have a connect with them. ऐसा नहीं कि you have a boundary that you cannot reach out to them. And we have great meetup sessions where people from California come to India to have a meet and greet session. So there you can connect with them and get to know more about them. उनके departments में क्या चल रहा है वो updates आप ले सकते हो. And in IJPs, internally you can grow also if you are really interested to work in that department. So once you step in Apple, I mean, the life is pretty comfortable and it is also challenging as well. And when it comes to growth aspect, growth भी अच्छी तरह से होता है. So you just need to take the leap. Once you are there, you can easily climb the ladder and grow. सो आदित्य, जान के अच्छा लगा आपसे एप्पल के बारे में. तो आदित्य जो कि एप्पल हैदराबाद में है, थैंक यू आदित्य आप आने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. आई होप कोई भी पर्सन जो एप्पल में ज्वाइन करना चाहता है, हैदराबाद या बैंगलोर, 2 कैंपस है ना एप्पल हैदराबाद एंड बैंगलोर? यस, नो, वी आल्सो हैव अ कैंपस इन दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव में भी है. सो वी हैव डिफरेंट कैंपसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो जैसे हैदराबाद में सिर्फ सिरी AIML सिरी का डिपार्टमेंट है और एप्पल मैप्स का डिपार्टमेंट है. बैंगलोर में मेन हेडक्वार्टर्स है इंडिया का. तो every department has a different office spread across India. So yeah, in Hyderabad it is only Siri and Apple Maps. ओके. सो आई थिंक आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि एप्पल में जॉब कैसे, क्या क्या पर्क्स हैं, क्या क्या अलाउंसेस हैं, व्हाट आर द सैलरी एक्सपेक्टेशन. और आदित्य ने काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर करे होंगे. थैंक यू आदित्य फॉर कमिंग एंड गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू आवर सब्सक्राइबर्स. Thanks a lot, Lucky Bhai. It was a pleasure talking to you as well. Thank you. And I hope that whoever is aspiring to be a part of Apple, the ticket you know, the way you know. And if you have any other queries, you can reach out to me as well. I'll share my LinkedIn profile. So you can just come and text me. And if you want any referrals, I mean, please feel free to come over. I will help you at that. So I will post Aditya's LinkedIn profile in the description box. Yes. Thank you, Aditya. Thanks a lot, Lucky Bhai.